everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator, and today we are going to understand the Hindu newspaper dated 20th October 2021. तो आज हम 20 अक्टूबर 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालाइज करने जा रहे हैं. As you all know the ritual of the class, first we are going to start with solving 1 to 2 prelims related question. Okay, it can be more than 2 also. And then we are going to decode the newspaper, and then at the end of the lecture we'll be solving again few questions related to prelims, and I'll give you homework question also so that you can practice after the class. Okay, तो ये हमारी क्लास का ना ड्रिल रहता है. सबसे पहले हम हेडलाइंस डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम प्रीलिम से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम आर्टिकल्स को एनालाइज करते हैं, और फिर क्लास के एंड में हम फिर से कुछ प्रीलिम से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए होमवर्क के तौर पर देंगे. Okay, this will be the drill of the lecture. So let's get started. One more thing, the class PDF will be uploaded on my Telegram channel, so simplifying UPSC with ease. The link is also given below in the description box. You can just click on the link and you can join the channel on Telegram app. Telegram app download करेंगे ना, उसमें भी सर्च ऑप्शन में आप simplifying UPSC with ease टाइप करेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो. ठीक है, तो शुरू करें लेक्चर. सब लोग रेडी हैं? तो फर्स्ट आई विल शो यू द इम्पोर्टेंट हेडलाइंस दैट यू हैव टू स्टडी फ्रॉम द न्यूज़पेपर टुडे. वी आर एक्सक्लूडिंग द एडिटोरियल पोर्शन हियर बिकॉज एडिटोरियल आपके सेल्फ एनालिसिस के लिए है. ओके, सो फर्स्ट इज EU फूड रिकॉल लिंक्ड टू GM राइस फ्रॉम इंडिया. Page 1, Capital's air quality deteriorates. Page 2, India, Israel, UAE and US launch Quad forum. Chinese patrolling slightly up in east. Bhaskar Abda to be added to official calendar of Assam. Israel clears residency for Palestinians. Israel के ऊपर क्वेश्चन आपका ना 2018 में भी आ चुका है. ठीक है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको ढंग से पढ़ना. So first we are going to solve one prelims related question. Okay, consider the following statements. In 1982, European Coal and Steel Community was founded under Treaty of Paris by 6 countries called SIX. Second statement, European Atomic Energy Community is an international organization established by Euratom Treaty. Third, European Economic Community was created by Treaty of Rome 1957. You have to select the correct answer. Correct answer आपको इसके अंदर select करना है. See, statement number 1 is saying in 1982, European Coal and Steel Community was founded under Treaty of Paris. Treaty of Paris 1951 में साइन की गई थी. Okay, so here the year 1982 will be wrong. It is 1952. Okay, and these 6 countries were, ये 6 countries कौन सी थी? Write it down. These were Belgium, France, Germany, Italy, Luxembourg, इसको पूरा लिख लेना, and Netherlands. These were the 6 countries. First statement is wrong, so your D and B option will be eliminated. Second statement, European Atomic Energy Community is an international organization established by Euratom Treaty. Now again, this treaty was signed in 1957. Second statement is correct. Third statement, European Economic Community was created by Treaty of Rome. तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है. ट्रीटी ऑफ रोम 1957 में साइन हुआ था. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी. सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. स्टेटमेंट 2 and 3 आर एब्सोल्युटली करेक्ट. सेकंड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. गंधमर्दन आयरन ओर माइंस इज लोकेटेड एट ओडिशा. People living in Gandhmardhan hills are from the Nahara community who are not included in scheduled tribes list. Here the Gandhmardhan iron ore or the cooperative society, it's a loading and transporting cooperative society. They were created to take care of villages situated around the mines. Okay, correct answer over here is C. C आपका correct answer है. Both the statements are absolutely correct. Now the first article in the Hindu newspaper is EU food recall linked to GM rice from India. This article is important from the perspective of environment. The context of this article is that the GMO rice, genetically modified rice from India, has been withdrawn in the European Union. Okay,
यूरोपियन यूनियन बेस्ड कंट्रीज जो है वहां से जो जीएमओ है, जीएमओ राइस है, जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस है, इंडिया से उसको विड्रॉन कर दिया गया है एंड इंडियन कोalition इज आस्किंग फॉर एक्शन राइट नाउ. So what is the news? There have been 500 tons of genetically modified rice which have been discovered in a consignment that India exported to European Union countries. जून 2021 में इंडिया ने यूरोपियन यूनियन कंट्रीज को जेनेटिकली कुछ ग्रेन्स जो है वो एक्सपोर्ट किए थे. उसके अंदर उस कंसाइनमेंट में 500 टन जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस जो है वो डिस्कवर किया गया है, which has led to the loss of reputation of India and its agricultural market. Now there were several batches of rice flour which were marketed in several European countries like Mauritius, Iraq, Qatar, Dubai, US, Lebanon, etc. And they were recalled for use in the European Union after the European Commission Rapid Alert System for Food and Feed identified illegalities in food products upon a check. And the basic identification was done. Basic you can say जो हमें पता चला है वो कहाँ से डिस्कवरी कहाँ से हुई है, that 500 tons of broken Indian white rice were imported into Europe. They were transformed into rice flour, resold and put on the market in many European countries as an ingredient in the chocolate sweets M&Ms जो मिलते हैं ना यूएस में और बाकी कंट्रीज में, यूरोप में आप देखते हो, तो वो इसके अंदर डिस्कवर किए गए थे. Now GM crops, what are GM crops? This is important for prelims. सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये GM crops क्या होते हैं. So GM crops, these are those that have been modified genetically to enhance their nutrition quotient. But in India, several civil society groups have raised health and environmental related concerns related to the usage of GM crops. And these were identified in the export consignment to European countries, and that has led to the loss of reputation of India and its agricultural market. समझ आ रही है बात? So इंडिया ने अभी अप्रूव किया नहीं कमर्शियल कल्टीवेशन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का. इट इज येट टू अप्रूव कमर्शियल कल्टीवेशन. It has, however, cultivated multiple GM rice varieties at different stages. Okay. So what is a genetically modified organism? Genetically modified organisms, or they are also known as GMOs. These are the living organisms. These are living organisms whose genetic material has been superficially, artificially manipulated in a lab through genetic engineering. This creates combination of plant, animals, bacteria, virus genes that do not occur in nature. Basically इनको cross breeding method से genetically engineer किया जाता है. Natural form में nature में ये ऐसे occur नहीं करते हैं. So here the question comes, what is a GM crop? अब यहाँ पर एक और question आ जाता है. तो भैया ये GM crop क्या होता है? So GM crop, write it down. It is a crop which has a gene. It has a gene. Write it down. Artificially inserted into it from another species. Even unrelated. This another species can even be unrelated, to give it some desired properties. इसको हम बोलते हैं GM crops, genetically modified crops. Are there other GM crops in India? No, the government has not approved commercial cultivation. This is also important fact. Please write it down. This is important for prelims. Government has not yet approved commercial cultivation. अभी तक गवर्नमेंट ने कमर्शियल कल्टीवेशन को अप्रूव किया नहीं है अपनी कंट्री में. ठीक है, GM crops के of other GM crops. The first GM crop variety approved for commercialization was BT cotton. जो पहला GM crop अप्रूव किया था ना कमर्शलाइजेशन के लिए गवर्नमेंट ने, वो BT cotton था. ठीक है, उसके बाद बॉल गार्ड 1 भी था which provided immunity against the pink bollworm and it was developed by Monsanto. Okay.
So this is important. BT cotton is the only genetically modified crop that is allowed in India. ये इकलौता ऐसा GM क्रॉप है जो अभी भारत में अलाउड है. इसके अलावा और किसी को ये परमिशन नहीं दी गई है. ठीक है. Another important point about BT cotton is, please write down. This is important for prelims. Okay. It has the alien genes from the soil bacterium Bacillus thuringiensis, okay, which is known as BT. That is why the name is BT cotton. It allows the crop to develop a protein toxic to the common pest pink bollworm. So pink bollworm is a pest which cannot infect BT cotton because Bacillus thuringiensis is protecting it. Okay, similarly we have HT-BT cotton also, we have BT brinjal also, DMH11 mustard also. Okay, point clear हो गए यहाँ तक? Unacademy has launched 9 months combo to crack UPSC Prelims 2022 batch. This offer is valid till 31st October 2021, wherein if you subscribe to Unacademy Plus and on Unacademy Plus, if you take a combo pack, okay, then only this 9 months combo offer will be given to you. The link is given below in the description box. नीचे description box में इस batch का link दिया है. Click on that link and subscribe to the 9 months combo pack. Combo means pre, mains and optional. तीनों की तैयारी we'll be doing. And in this 9 months combo pack, we are providing you total 38% discount. 28% discount already Unacademy is giving you with if you are taking combo package because it has optional also. And 10% discount will be providing you if you use code अर्पिता10. अगर आप अर्पिता10 कोड यूज करते हो तो ये 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा. Introductory price of this 9 months combo pack is rupees 45,675 only. In just 45,600 rupees, you are getting pre-mains optional syllabus coverage from top educators, test series, 20 plus books which will be delivered to your house, and this offer is valid only till 31st October. After this 31st October, the offer will cease to exist. So make sure that you take your combo subscription of 9 months before that. ये 9 महीने का पैक होगा आपका जिसके अंदर आपको पूरी प्री से लेकर ऑप्शनल तक की सारी तैयारी करवाई जाएगी. ठीक है, मेंस भी कवर्ड होगा इसमें, टेस्ट सीरीज भी कवर्ड होंगे, सब कुछ कवर्ड होगा एट जस्ट 45,675 rupees. Whereas offline coaching centers, they take 2 to 3 lakhs for UPSC preparation. But here in just 45,675 we are providing quality batches, book list, resources, everything to you so that you can clear your UPSC CSE journey with flying colors and also with grace. On the other hand, we have one subscription to crack it all offer. This particular offer is valid only till 20th October, that is today. So here what we are going to offer you at Unacademy Plus is that if you take a GS Plus optional combo subscription of 1 year or 2 years, you will get total 35% discount. 25% already Unacademy is providing, 10% if you use code ARPITA10. टोटल 35% डिस्काउंट के साथ, दैट इज अगर 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो कॉम्बो का यानी कि जीएस और ऑप्शनल प्री मेंस ऑप्शनल का तो 57,000 रुपीज का पड़ेगा. 2 इयर्स का सब्सक्रिप्शन 82,000 रुपीज का पड़ेगा. दैट मीन्स आपका 1 लाख से कम के अंदर अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो तैयारी हो जाएगी. और 50,000 की रेंज के अंदर आपकी पूरी प्री से लेकर मेंस तक की तैयारी होगी इंक्लूडिंग ऑप्शनल, जहां पर 3 से 4 लाख बाहर ऑफर लिए जाते हैं कोचिंग सेंटर्स के द्वारा. पर ये ऑफर ना आज तक ही वैलिड है. तो एवरी डे काउंट्स, एवरी मिनट एंड एवरी सेकंड्स काउंट. द लिंक इज गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है इन ऑफर्स को लेकर, इनके क्वालिटी को लेकर, तो आज के आज आप अनअकैडमी प्लस पर जो मैंने नीचे लिंक दिया उस पर क्लिक करें, आप डेमो सेशंस लें क्योंकि स्पेशल क्लासेस भी हैं और देखें कि वहाँ क्वालिटी कितनी बढ़िया है. रिसोर्सेज वगैरह सब आपके घर तक पहुंचाए जाएंगे, टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी, एनालिसिस किया जाएगा, डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, सब कुछ होगा. तो आप आज के आज सब्सक्रिप्शन ले लीजिए. 1 साल का 2022 के स्टूडेंट्स और 2 साल का 2023 के स्टूडेंट्स या 24 के स्टूडेंट्स, एंड मेक श्योर कि आप फटाफट से सब्सक्रिप्शन लेकर अपनी तैयारी शुरू कर लें. You know, we are also offering test series for pre, mains and optional, and this is worth 45,000, but for you it's free if you are taking a 1 year and above combo subscription. अगर आप आज के आज फटाफट से ये combo subscription ले लेते हो ना अनअकैडमी प्लस पर, 1 साल या उससे ज्यादा का, 9 मंथ्स के पैकेज पे ये अप्लाइड नहीं होगा, 1 साल या उससे ज्यादा का अगर आप लेते हो
तो आपको ये टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। 45,000 रुपीज की है, बट आपको फ्री मिलेगी, जिसके अंदर हम ऑप्शनल को भी कवर करेंगे, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज भी कवर करेंगे। ओके एंड आपको इसके अंदर डिस्काउंट भी मिल रहा है, जो मैंने आपको बताया। दिस ऑफर ऑल्सो इज जस्ट टिल 20th October, दैट इज टुडे। The next article, capital's air quality deteriorates. Air quality of the city slightly deteriorated to satisfactory level on Tuesday from the good category. Good से आप satisfactory पे आ गया है। Here what you need to study is, you need to study the AQI. What is air quality index? यहाँ पर हमको पढ़ना है कि ये air quality index क्या होता है आखिर। This is important for your prelims and also for GS paper 3. Okay. So let us understand what is the National Air Quality Index. So National Air Quality Index, it was launched in 2014. And when it was launched now, it gave an outline, a kind of slogan, one number, one color, one description, for common man to judge the air quality within its area, within its environment or vicinity. And National Air Quality Index uses 8 pollutants in order to measure the air quality. PM10, the presence of particulate matter 10, PM 2.5. Then it also measures the presence of nitrogen dioxide, sulfur dioxide, then carbon monoxide. Then we have over here the ozone, O3. We have lead and ammonia. This is lead, PB. Okay. Air quality index on the other hand has 6 categories of air quality: good, satisfactory, moderately polluted, poor, severe, very poor. Right now it is in Delhi, it is satisfactory. Okay, it has shrunk from good to satisfactory. It is developed by CPCB in consultation with IIT Kanpur. These are the important factors that you should remember for your preliminary examination. Now the next article is India, Israel, UAE and US are going to launch, they are proposing to launch new quadrilateral economic forum. Now, this new quadrilateral economic forum point is really important because last year in 2020 also, Israel, UAE and Bahrain signed the Abraham Accords, which was mediated by the USA. And this Abraham Accord is the first Arab-Israeli peace deal which is made in 26 years. And also another important point you need to remember is about the previous agreements. For example, there were the only two peace deals between Israel and Arab states in more than a quarter of a century, and Egypt was the first Arab state to sign a peace deal with Israel in 1979, and Jordan signed a peace pact in 1994 with Israel. Okay, this is important. Now, when we talk about this Abraham Accord, one more thing to remember is that as per the agreement, here UAE and Bahrain are going to establish embassies and they are going to exchange ambassadors. They are going to work together with Israel, okay, across a range of sectors like tourism, trade, healthcare and security. And the Abraham Accord also opened the door for Muslims around the world. Why? To visit the historic sites in Israel and to peacefully pray at Al-Aqsa Mosque. This is important. Al-Aqsa Mosque, where it is? कहाँ पर है ये मॉस्क, ये आपको बताना है. This mosque is in Jerusalem. कहाँ पर है ये मॉस्क? ये है जेरूसलेम में, which is the third holiest site in Islam that you have to remember. ठीक है, write it down. This is the third holiest site in Islam. इस्लाम में तीसरी holiest, तीसरी ज्यादा बहुत पवित्र और बहुत पूजी जाने वाली जगह मानी जाती है. इन इस्लामिक ट्रेडिशन द काबा इन मक्का, मक्का में ना काबा है, यहाँ पर लिख लीजिए. इन मक्का वी हैव काबा. Okay, it is in Kaaba. It is considered the holiest site. Then we have the Prophet's Mosque. Write it down. Then we have the Prophet's Mosque, which is in Medina. ये है मदीना में. And then we have the Al-Aqsa Mosque, which is in Jerusalem. These are the three most holiest site in Islam. Mecca में Kaaba, Prophet's Mosque in Medina, and Al-Aqsa Mosque in Jerusalem. Okay? तो यहाँ पर इस आर्टिकल में ना आपको अरब और इजराइल के रिलेशंस के बारे में पढ़ना होगा. दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे. स्टडी अबाउट अरब इजराइल रिलेशन. ओके, आज पढ़ना है आपको. जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल,
Unacademy has launched 3 months festive combo offer, wherein now you will get 3 months of the combo Unacademy Plus subscription consisting of prelims, mains and optional batches, test series, books, everything, doubt clearing sessions, everything at an introductory price with 10% discount, that is rupees 28,350. तो अगर आप Unacademy Plus पर एकदम से साल भर का सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहते हो या आप 2021 की तैयारी कर रहे हो मेंस की, तो 3 मंथ्स का आप ये कॉम्बो पैक ले सकते हो। ये फेस्टिव कॉम्बो पैक है, ठीक है। इसमें आपको टोटल 20% डिस्काउंट मिलेगा। इनिशियल आप जब सब्सक्राइब करोगे उसी पे आपको 10% लगकर मिल रहा है डिस्काउंट, और 10% एक्स्ट्रा अगर आप कोड यूज करते हो अर्पिता 10। ओके, दिस कोड विल ऑल्सो फेच यू एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट एट जस्ट 28,350। यू आर नॉट जस्ट गेटिंग प्री मेंस बट ऑल्सो योर ऑप्शनल प्रिपरेशन बैचेस, बुक्स, टेस्ट सीरीज, everything in just this 3 months combo pack. And this offer is valid till today only, that is 20th October 2021। बस आज तक ही ये ऑफर वैलिड है, तो मेक श्योर कि आप फटाफट आज ही सब्सक्राइब कर लो ताकि आप इस ऑफर का अच्छे से बेनिफिट ले सको। ओके, द लिंक्स आर गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मेक श्योर दैट यू टेक योर सब्सक्रिप्शन टुडे itself so that you can get your benefits and all the facilities on Unacademy Plus related to your pre-mains and optional preparation. आर्टिकल सेज भास्कर आपदा टू बी एडेड टू ऑफिशियल कैलेंडर ऑफ असम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके एंट्रेंस लेवल एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं। कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन 110% आते ही आते हैं। So this is also related to paper 1. In addition to the Shaka and the Gregorian, Bhaskar Abda will be used in the official calendar by the Assam government. Currently, the Assam government, it uses the Shaka calendar and the Gregorian calendar. Okay, the Shaka calendar uses lunisolar time, that is lunisolar time use करता है Shaka calendar अभी, ठीक है। आपके जो हिंदू कैलेंडर होते हैं ना उसमें जो ट्रैकिंग सिस्टम होता है ना, टाइम को मेजर करने का सिस्टम, Shaka कैलेंडर में यूज होता है lunisolar टाइम। ग्रिगोरियन कैलेंडर में यूज होता है सोलर डेटिंग सिस्टम, सूरज के हिसाब से डेटिंग सिस्टम होता है टाइम का। Bhaskar Abda, this is really important because Bhaskar Abda in the official calendar, it was announced by Assam CM, and it is an era counted from the date of coming up of a 7th century local ruler. This will be added to the Shaka and Gregorian in the official calendar by the Assam government. Bhaskar Abda started when Kumar Bhaskara Varman was crowned as the ruler of the Kamrupa kingdom. He was a contemporary and political ally of northern Indian ruler who was Harshvardhana. You must have studied about Harshvardhana in medieval Indian history, right? So unlike the Gregorian, जहाँ पर day start होता है midnight में, Assamese calendar begins and ends at a sunrise over 24 hours. And Gregorian goes by the solar cycle. Shaka and Bhaskar Abda uses lunisolar cycle. तो यहाँ पर भी लिख लो, ये भी lunisolar cycle ही यूज करता है टाइम मेजर करने के लिए, which is based on the phases of moon and the solar year. Okay, and the gap between Bhaskar Abda Gregorian is 593. 593 का गैप रहता है, 593 टाइम जो टाइम गैप है वो रहता है ग्रेगोरियन और भास्कर अब्दा कैलेंडर के बीच में। ओके, सो ग्रेगोरियन कैलेंडर it is also known as, please write it down, ग्रेगोरियन कैलेंडर को हम और क्या बोलते हैं? It is also known as the new style calendar. It is also known as the new style calendar. इसको हम न्यू स्टाइल कैलेंडर भी बोलते हैं। इट इज अ सोलर डेटिंग सिस्टम यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, एंड शाका कैलेंडर जो है ये स्टार्ट हुआ था 78 CE में, कॉमन ईयर में। It is based on the lunisolar reckoning of time and it consists of, write it down, 365 days and 12 months. Okay, like the normal Gregorian calendar. And Chaitra is the first month of the year which begins on March 22. Okay, after spring equinox. All right. So ये पॉइंट आप याद रखिएगा। एंड ऑल्सो रिमेंबर द नेम्स ऑफ द मंथ्स इन द शाका कैलेंडर। शाका कैलेंडर में ना जो नाम है ना मंथ्स के, महीनों के, वो याद रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल चैत्र, राइट इट डाउन प्लीज, इसका लिस्ट बना लो। चैत्र इट इज फ्रॉम March 21 टिल April 20। ओके, देन वी हैव वैशाख, उसके बाद हमारा होता है यहाँ पर वैशाख। वैशाख इज फ्रॉम April 21 टिल May 21। ओके, देन वी हैव ज्येष्ठ, दिस इज द शाका कैलेंडर मंथ। ये है मंथ्स आपके शाका कैलेंडर के। देन वी हैव दी ज्येष्ठ। ओके, ज्येष्ठ होता है आपका May 22 से June 21 तक। ओके, उसके बाद आता है अषाढ़। अषाढ़ में होता है यहाँ पर June 22 से July 22 तक। ओके,
देन वी हैव श्रवणा, उसके बाद आता है हमारा यहाँ पर श्रवणा विच इज फ्रॉम जुलाई 23 टिल अगस्त 22. एंड देन वी हैव भद्रा, उसके बाद हमारा आता है यहाँ पर भद्रा. भद्रा इज अगस्त 22 टू सितंबर 22. भद्रा के बाद आता है अश्विन. अश्विन इज फ्रॉम सितंबर 23 till October 22. Then we have Kartik month. Kartik month is the holy month also. October 23 to November 21. Then we have Agrahayana. Agrahayana is from November 22 till December 21. Then we have over here Posh. Posh month is from December 22 till Jan 20. Then we have माघ. माघ का महीना आता है Jan 21 till Feb 19. Then we have फाल्गुन month. फाल्गुन month is also holy month. ये होता है आपका Feb 20 से March 21 तक. Okay, these are the different months as per the Shaka calendar that you should remember. Okay, and always remember Shaka calendar is deemed as the national calendar. इसको ना भारत में नेशनल कैलेंडर के तौर पर कंसिडर किया जाता है. ओके, शाका कैलेंडर, बट इट इज सेल्डम यूज्ड आउटसाइड ऑफ वेरी फॉर्मल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डॉक्यूमेंट्स. बहुत कभी कभी यूज होता है. ठीक है, सो दिस वाज द आर्टिकल ऑल अबाउट. So this was all for today. I hope you enjoyed today's lecture. उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा. If you really enjoyed this lecture, do let me know in the comment section. And also the class PDF will be uploaded on the Telegram channel, Simplifying UPSC with Ease. You can directly download it from there. Thank you and have a beautiful day ahead. But before we end this session, we are going to give you some questions for homework. So the next question is, Race to Zero Global campaign is carried out under the aegis of World Bank, UNESCO, UNFCCC, OECD. Correct answer to this question will be, इस question का correct answer होगा, yes, it is C, UNFCCC. It is UN backed. ये जो Race to Zero Global campaign है, write it down. It is supported by United Nations and it aims, write it down, the aim is to create jobs while meeting the goals of climate change and sustainable development. This is the aim of Race to Zero Global campaign, backed by and launched under the aegis of UNFCCC. Okay. Now the next question is, the mangrove ecosystem across Sundarbans is threatened due to frequent clearing of shorelines for shrimp cultivation, building of dikes for the protection of coastal villages from storm surges. Which statement is correct? कौन सा statement इसमें से correct है? So the correct answer to this question is, it is C. Both the statements are absolutely correct. दोनों ही statements बिल्कुल correct हैं. तो ये था आपका आज का टेस्ट questions. Do let me know आपने कैसा score किया. This was all for today. I hope you enjoyed this lecture. On this note, we are wrapping up the class. Thank you everyone. Have a nice day ahead.